जियोपॉलिटिक्स का असली गेम, कैसे एक सिग्नेचर किसी देश की किस्मत बदल देता है, कैसे सैंक्शंस दुनिया बदल देते हैं और कैसे बिना हथियारों के लड़ा जाता है महायुद्ध। हेलो एवरीवन, तो हम आते हैं सीधे आज के टॉपिक पर, जो कि है सैंक्शंस। जी हाँ, वही सैंक्शन जो कि एक ऐसा टूल है जो किसी युद्ध को रोक भी सकता है, जो आतंकवाद के खिलाफ भी लड़ सकता है और इवन सत्ता पलट भी कर सकता है। You know, nowadays it is used for everything from freezing a few bank accounts to completely cutting off a country's trade. लेकिन एक्चुअली सैंक्शंस क्या होता है, आज हम इसी बात से पर्दा हटाने वाले हैं। ठीक है, इकोनॉमिक सैंक्शंस वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स के सबसे कंट्रोवर्शियल टूल है। We are going to start with what sanctions are. Then a little history lesson from way back in ancient Athens all the way up to today's smart sanctions. ठीक है, ये एक बहुत डिबेट वाला टॉपिक है and we will easily tackle this debate. ये कैसे काम करता है, क्या सच में ये इफेक्टिव है और क्या इसको लेकर स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, फ्यूचर क्या होगा, ये सारी बातें समझेंगे हम आज के इस टॉपिक में। तो क्या है इकोनॉमिक सैंक्शंस? क्या ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी है और या फिर सच में ये एक आज के समय में पावरफुल वेपन बन गया है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा, राइट, व्हाट आर द इकोनॉमिक सैंक्शंस? इट इज ऑल अबाउट कटिंग ऑफ अ कंट्रीज एक्सेस टू ट्रेड एंड फाइनेंस। बेसिकली it's economic lifeline to force a change in its political behavior. We can think like economic sanctions as financial or commercial penalties that are specifically designed to cause economic pain. And the whole point is not just to punish someone. It is to force a target. And that could be a whole country, a company, or even just one person to change what they are doing. And I believe you all are not going to mix up with tariff, because we have already seen tariff in detail in the previous lecture. Tariffs are all about economics. They are basically attacks on imports to help out your own country's businesses. But sanctions are about pure politics and power. They are a weapon, plain and simple, designed to force another country to change what it is doing. Right? Now, for practical understanding, let's see how it started with examples from the very beginning to build a really solid foundation for what we have been even talking about. Using economic sanctions to win a political fight is as old as civilization itself. And the history here is pretty wild. Alright? तो हम एक्सप्लोर करते हैं एक हिडन बैटलफील्ड को। इकोनॉमिक वॉरफेयर का एक बहुत बड़ा, बहुत लंबा इतिहास रहा है। आप ये सोच के देखिए कि आप बिना लड़े ही किसी कंट्री को अपने सामने सरेंडर करवा लें। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है। कहते हैं ना, जब आप किसी के पेट पे लात मार देते हैं, यानी उसको फाइनेंशियली एकदम तोड़ देते हैं, तो वो बंदा कुछ करने के लायक ही नहीं रह जाता। यही होता है इकोनॉमिक वॉरफेयर में। यही काम होता है एग्जैक्टली सैंक्शंस का। यानी कि किसी के साथ आप अपने सारे बिजनेस खत्म कर लो, ट्रेड खत्म कर लो, तो क्या होगा? उस आदमी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू ट्रेस इट फ्रॉम फिजिकल ब्लॉकेट्स टू मॉडर्न फाइनेंशियल वॉरफेयर। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 432 BC, एंशिएंट ग्रीस के समय में। एथेंस जस्ट बैंड मर्चेंट्स फ्रॉम मेगारा। दैट वाज इट. That was the plan, but it totally backfired. Instead of preventing a war, this little ban actually kicked one off. Right? One war started, in fact. And now, directly we jump to 1806. Napoleon tried to bankrupt Britain by blocking all of its European trade. But as you know, markets are resilient. Smuggling exploded, and the whole thing fell apart. And it just did not work. After World War I, the whole idea changed. It wasn't about force. It was about international law. We have already seen that how the League of Nations saw sanctions as an antidote to war.
the idea was to team up economically. And the thinking was, hey, if the whole world boycotts you, you will surrender without a fight. And same fundamental principle was applied even in European Union also, right? We will be seeing European Union very soon. And then there was Cold War standoff, which we already have discussed in previous lectures. And in the 1980s, we saw this work against apartheid. It was this mix of government and moral pressure. The key was that it just became more expensive to maintain apartheid than to finally end it. But the 90s sanctions on Iraq were a totally different story. A really devastating humanitarian crisis. So the world learned a hard lesson. Broad sanctions hurt the wrong people. The focus had to get smarter. And that brings us to the modern era. मगर आजकल के जो सैंक्शंस हैं वो बड़े कॉम्प्लेक्स नेचर के हैं. पहले तो वो ब्लैकलिस्ट करने से शुरुआत करते हैं, उसके बाद पूरी की पूरी इंडस्ट्री, चाहे वो एनर्जी इंडस्ट्री हो या डिफेंस इंडस्ट्री हो, उसको टारगेट करते हैं. और आजकल के सारे सैंक्शंस इक्वल नहीं होते हैं. किसी के साथ कुछ किया जाता है, किसी के साथ कुछ किया जाता है. और अगर हम स्ट्रैटेजिकली देखें, इट रियली मैटर्स हाउ, व्हाई एंड अगेंस्ट whom these powerful tools are used. They are our key tool in trying to stop countries like Iran and North Korea from developing nuclear weapons. And of course, as we have seen all over the news, they are often the first response to outright military invasions. So it is pretty clear, right? Sanctions have come a long way from just blocking a few ships at a port to these incredibly complex financial weapons. All the smart sanction. So we have got two main flavors. On one hand, you have the big comprehensive sanctions. Think of it like a blunt hammer. These go after an entire country's economy, affecting pretty much everyone. But then on the other side, you have what experts call smart or targeted sanctions. These are much more like a surgical scalpel. They zero in on specific people, like political leaders or key parts of an economy, trying to minimize the harm to regular citizens. They needed a scalpel, not a sledgehammer. Now let us see why and how these economic sanctions toolbox things are actually used out there on the world stage. You know, the reasons for using sanctions can be all over the map. Sometimes it is pretty symbolic. It's a way of saying we don't like what you are doing. And it's a step up from a strongly worded letter. I mean, किसी को आपने वार्निंग दी, वो नहीं समझ रहा है, तो आप वार्निंग देने वाला काम नहीं करोगे ना, फिर आप सीधे सैंक्शन लगाओगे. इट इज स्टिल शॉर्ट ऑफ वॉर. तो लड़ने से तो अच्छा ही है ना कि आपने सैंक्शन लगा दिए. युद्ध की त्रासदी से तो बच जाएंगे ना. बट एट द सेम टाइम, ऑन द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, द गोल्स आर way more ambitious. It is just about signaling disapproval, deter future actions, trying to force huge policy changes, uphold international law, promote human rights, or even cut off the money flowing to terrorist groups, enforce international norms, and finally, to punish or retaliate. So how do you actually apply all these pressure? Well, the toolbox is pretty diverse. You can slap on trade restrictions, blocking key imports or exports. You can even enforce an arms embargo. You can hit officials with travel bans. Or you can even freeze their assets, literally locking up the bank accounts of specific people and companies. It's all about finding and squeezing a target's economic weak spots. And there's one tool in that box that has become especially powerful over the last few decades: financial sanctions. The United States in particular has this incredibly powerful toolbox. And why is that? Well, it is because the United States dollar, the currency, is at the very heart of the global economy. We all know that. It's an era where the weapon is not blockade. It is the dollar itself. In fact,
I'm going to cover this topic very soon because this is very important and very close to my heart. In fact, ये राइट टाइम है कि हम डॉलर पे ही बात करें। तो हम इस टॉपिक के तुरंत बाद डॉलर पे बात करेंगे और हम बात करेंगे डी डॉलराइजेशन पर भी। हम बात करेंगे कि कैसे यूनिवर्सली डॉलर को एक ग्लोबल करेंसी की तरह एक्सेप्ट किया गया और कैसे डॉलर ने इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हुए आज हर सारी दुनिया में अपना ऐसा भय फैला रखा है कि लोग सोचने लगे हैं कि डॉलर का दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है। तो हम इस पे बहुत डिटेल में टॉपिक बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग। जब आप उस टॉपिक को देखेंगे, सुनेंगे, तब आप समझेंगे कि क्यों लोग अब इस डॉलर का एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, क्यों लोग बात कर रहे हैं कि कोई ऐसी भी एक करेंसी होनी चाहिए जो डॉलर को चैलेंज कर सके। और इसके लिए अगर आपने ध्यान दिया हो, ब्रिक्स नेशन लगातार एक करेंसी की बात कर रहे हैं, ब्रिक्स की। सो ओके, कमिंग बैक टू दी present topic. So by controlling access to dollars and the US financial system, Washington can basically unplug almost any company or country from the rest of the world. It's an incredible amount of leverage which America uses in the global economy to maximize and freeze money in transit, since most trade flows through New York. But that leads us to the most important question of all, कि ये sanctions कितने इफेक्टिव हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और ये भी जानना है कि क्या इसका कोई डेटा है कि कितने इफेक्टिव होते हैं इस तरीके के sanctions। तो चलिए, अगर आपको एक्चुअली किसी सैंक्शन को इफेक्टिव करना है तो आपको ज़रूरत होती है मल्टीलैटरल सपोर्ट की। जब कई लोग एक साथ में आते हैं और किसी के खिलाफ खड़े होते हैं तो नेचुरल सी बात है, उसको जेन्युइन ठहराया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप अकेला कोई काम करते हैं एक मोनोपोली की तरह, तो लोग आपके साथ नहीं आते हैं। और दूसरा तरीका है आपको सैंक्शंस को इफेक्टिव करने के लिए कि आपका जो लक्ष्य है, आपका जो गोल है उस सैंक्शन के पीछे, वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए और रियलिस्टिक होना चाहिए, ठीक है। एमिंग फॉर अ स्मॉल पॉलिसी चेंज इज अ लॉट मोर लाइकली टू वर्क देन ट्राइंग टू फोर्स अ टोटल regime change. Then comes the target vulnerability. Sanctions work best when they are paired with active diplomacy. A strong enforcement prevents the target from evading or circumventing sanctions. और अगर हम देखना चाहें ना कि कितने इफेक्टिव होते हैं sanctions, तो इसके लिए हमें रियल टाइम एग्जाम्पल्स पे बात करनी होगी, यानी कि उन sanctions को देखना होगा जो वर्ल्ड वाइड लगाए गए हैं। Just compare the US embargo on Cuba, which is almost entirely a solo American effort, lacking international support, with the sanctions on North Korea having the backing of the United Nations and the whole coalition of countries. And that creates so much more pressure, which just goes to show you how absolutely critical it is to get everyone on the same foot. Now you take Iran. They were cut off from the SWIFT system. I believe that you know what was the SWIFT system, right? So they could pump oil but couldn't get paid. And the biggest one, when G7 nations froze $300 billion of Russian assets just overnight in very recent past, right? So with this example of Russia, it is very important to cover the secondary sanctions now. This is where things get really complicated. Let me explain. You know, during this Russia-Ukraine war, US sanctions over Russia, that was a primary sanction. But then the US goes to a company in Germany and says, hey, if you keep doing business with Russia, we will cut off all your access to the United States financial system. Even same thing happened with India also, right? This puts companies and even whole countries in an impossible position. They have to choose between the US market and the sanctioned country, that is Russia. It's an incredibly powerful and deeply controversial tactic. During Russia and Ukraine war, US tried to impose sanctions as well as higher tariffs on many countries, including India. So after all this, now your question should be, how well do they work? Right? Historically, the only success rate of sanctions is 30%. They often fail. Now why? Because targets adapt or leaders just use the hardship to rally support at home.
But even when sanctions do seem to be working, they come with a huge cost. And that brings us to the much darker side of this tool. Sanction अकेले नहीं आता है, ये अपने साथ में कुछ बहुत ही अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आता है, बहुत सारा क्रिटिसिज्म लेकर आता है, इसके कुछ बहुत ही सीरियस इफेक्ट होते हैं जो सब पर पड़ते हैं. ठीक है, क्या है वो? Sanctions can cause immense suffering for ordinary people, leading to shortage of food and medicine. It can strengthen authoritarian regimes. It can even fail to achieve policy goals. It can create illicit market. It can strain diplomatic relations. And it can bring accusations of hypocrisy, right? So the sanctions end up hurting everyday people, civilians, way more than the leaders they are actually targeting. Like, you remember the sanction on Iraq back in 90s are probably the most tragic and well-known example of this going wrong. The argument goes that sanctions are not really an alternative to war. Instead, they are a form of economic warfare using financial weapons to cripple a country, often hurting the most vulnerable people in the process. So we are left with this one huge central question. Are sanctions a vital, sophisticated tool for keeping the peace? Or are they just a blunt instrument of economic coercion that often does way more harm than good? Think over until we meet in the next session. Thank you. Good day.